Hello and welcome everyone to Busynomics. In the lecture series of Business Environment, today we are going to discuss socio-cultural environment in detail. Right. So I have already discussed the micro factors and the macro factors. If you have missed that video, so go to the playlist and watch the rest of the videos. Okay, now coming towards the socio-cultural environment, there are two words, one is socio and other is cultural. Okay, so this is made up of the two environments actually. One is social environment and the other is cultural environment. Okay, so under the socio-cultural environment, social factors and cultural factors both needs to be considered. Let's see the social factors. सोशल फैक्टर्स में जनरली क्या फैक्टर्स आते हैं? द पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ द ग्रोथ. अब पॉपुलेशन साइज और रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में स्टडी करने का ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इन द बिजनेस व्हेन वी टॉक अबाउट द STP, राइट, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग इन द पोजिशनिंग. सो बिजनेस हैव टू नो कि आप जिस भी पॉपुलेशन को टारगेट करने वाले हो उसका पॉपुलेशन साइज क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ क्या है. Next, if we talk, if we consider the next factor, that is age distribution. So आप किस एज ग्रुप को टारगेट करने जा रहे हो एंड ये एज ग्रुप किस जनरेशन को बिलोंग करता है, वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से पोर्ट्रे करोगे, आप अपनी पोजीशनिंग के जो प्लान्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो किस तरह से फॉर्मुलेट करोगे. इट डिपेंड्स ऑन दैट. नेक्स्ट इज़ वेल्थ एंड इनकम डिस्पैरिटीज़, क्योंकि जिस पॉपुलेशन को आप ऑफ़र कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को, उनका इनकम लेवल कितना है, कितनी इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं उन ग्रुप्स में, that also needs to be considered. Next, we have the social mobility, we have the job market mobility, and we have the health and education levels. Okay, so all these factors are important from the business point of view कि जब आप कि अपने किसी भी प्रोडक्ट या मार्केट सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हैं, यू आर प्लानिंग फॉर इट, तो सोशल फैक्टर्स को कंसीडर करना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कल्चरल फैक्टर्स, they have the major impact on the business, right? So cultural factors basically considers the language, religion, values, attitude, gestures, symbols. There are a number of the things which comes under the cultural factors. So let's see that what is culture first of all. So culture is like we all have a rough idea that what is culture. So this is considered as a generally accepted behaviors, customs, values ऑफ अ गिवन सोसाइटी. तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे एक सर्टेन सेट ऑफ द बिहेवियर है जो कि एक्सेप्टेबल होगा, कुछ सर्टेन कस्टम्स होंगे, देयर मस्ट बी सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ अ गिवन सोसाइटी. सो इन्हें कंबाइंडली जब हम बात करते हैं इनके बारे में, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कल्चर. कल्चर इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज शेयर्ड मोटिव वैल्यूज़, beliefs, identities, and the interpretations or the meaning of significant events that result from common experience of members of collective and transmitted across the age generations, right? Like culture is not something that you will find in a particular generation. It used to transmit from generations to generation, right? जो कल्चर आपको आज से 10 years पहले किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में मिला होगा, जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा, जो कस्टम्स होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज़ होंगे, वही आपको आज भी मिलेगा. देयर माइट बी मॉडिफिकेशन बट इट विल नॉट कम्प्लीटली चेंज एट ऑल, राइट? Okay, so let's see the elements of culture. Basically there are 5 elements of culture: symbols, languages, beliefs, values, and artifacts. Okay, so culture is further categorized into the two sets. The one set is about the non-material or symbolic culture, right? And other set is about the material culture. So symbolic culture या non-material culture, as the name suggests, कि इस तरह का culture, कुछ इस तरह के वैल्यूज़, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिनका, ठीक है, जो नॉन फिजिकल फॉर्म में है, वो हमारे नॉन मटीरियल कल्चर में आएंगे. लाइक वी हैव सिम्बल्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स एंड वैल्यूज अंडर इट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मटीरियल कल्चर, the things which are having the physical existence, so basically it considers the technology, clothing, eating utensils, and means of the transportation. Okay, so first of all, let's talk about the symbols. See, every culture is totally filled with different kind of the symbols which are having the different meanings, right? हर एक कल्चर में बहुत तरह के सिंबल होते हैं
जिनका कुछ मीनिंग होता है, वो कुछ इमोशन से या फिर कुछ रिएक्शन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फर्स्ट आपने मर्सिडीज़ का लोगो देखा होगा, सभी लोग अवेयर होंगे मर्सिडीज़ के लोगो से, बट इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, जो पीस का साइन है, पीस साइन, यू कैन से इट हेयर, ओके। तो मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ से लिया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि कितना डिफरेंट मीनिंग होता है कोई भी लोगो या कोई भी डिज़ाइन जब तैयार करता है कोई कंपनी अपने ब्रांड के लिए। सो it is always having a meaning, right? This is not meaningless at all. कोई भी ब्रांड का डिज़ाइन, कोई भी लोगो जब डिज़ाइन किया जाता है, कोई फाइनलाइज किया जाता है, तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, okay. So here are some examples, like we have the pink triangle, we have the symbol of the strength and resistance, we have the peace sign, we have the symbol that is used as a the symbol of the feminism of the feminist, and we have the anarchist as a circle A symbol, okay. So here are some symbols. Let's talk about the gesture. Gestures are what? Your hand movements, okay. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. वेरी फर्स्ट इज द ओके गेस्चर. दैट इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट, बट इट इज़ एक्चुअली हैविंग द डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज. जब कोई एक बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा है, सो इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट गेस्चर्स एंड मीनिंग ऑफ इट, राइट. अगर आप एक ऐसी कंट्री में किसी एक गेस्चर का ओके गेस्चर का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्राज़ील में, सो इन ब्राज़ील इट इज़ कंसीडर्ड एज अ रूड गेस्चर. सो व्हाट, like it may cause a big loss for your company, right? So let's see the meanings. Like the okay gesture is having the same meaning in America. In Japan it denotes money, and in Brazil it is considered as a rude gesture. Next is the V gesture or the V sign. In America it is considered as a sign of the peace and victory. In Japan, China, South Korea, Taiwan and Thailand, it is what? It is a cute pose when being photographed. So this is used for that purpose. But in UK, South Africa, Australia, New Zealand and Ireland, when the same gesture is done but with the back of the hand facing outward, like the same way it is presented here in the picture, so it is considered as an insult. So don't use these, this symbol in these countries. Next is the thumbs up gesture, very common for all of us, okay. So in America it is what? This is considered as a good, like when you want to appreciate someone, you actually thumbs up, or it is also used when hitting, okay. Next, in Iraq or Iran, this is actually equivalent to insult. तो अगर आप इस सिंबल का यूज़ इन कंट्रीज़ में लाइक ईरान और इराक में कर रहे हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली a wrong gesture to use in these countries. Next is the stop or talk to hand gesture. This is very common for us, like when we don't want someone to talk anymore, like हमें कहना है कि बस आप रुक जाइए, मत बात करिए, और अगर फिर भी कोई कंटिन्यूस बोल रहा है, so like this is like talk to my hand, don't talk to me. So in America this is having the same meaning. But if we consider it in the countries like the Greece or Sindh, so this is considered as an insult. In Mexico or Panama, this is used to say hi, but when steady or moving it repeatedly towards the receiver, so what does it mean? Like you will see. So this is what? This is just a warning that the giver is going to tell an authority figure. Okay, let's talk about the language. Generally we consider English as a general language, like as a universal business language, but under the language the basic problem is related to the local languages, right? Like every country is having the different languages. There are number of the languages which are being used across the world. So apart from the English, all other local languages are a big problem for the multinational organizations. Perhaps our most important set of symbol is language. In English, the word chair means something that we sit on. This is simple for us.
But in Spanish, the word silla means the same thing. The diversity of language among various foreign countries is a source of many challenges for multinational companies, as I said. And although there is a tendency of accepting the English as a universal business language, but the companies are aware that it also provokes resistance by locals in many of the countries where they operate. So in some countries, local language actually plays, the dominant role. So that becomes a big problem. Let's see the main languages which are being used in the world. There are total 6500 languages all over the world which are being used. And if you talk about the India, so there are 122 major languages and 1599 other languages. Let's see the rank of the languages. Mandarin Chinese is at the top of the list of main languages of the world. There are 918 speakers. There are 918 million speakers of this language, which consist of the 11.922% of the world population. So you can see that being English as a universal language, there are still Mandarin Chinese, which is having 918 million speakers. Let's talk about the Spanish language. There are 480 million speakers of this language, which consist of the 5.994% of the world population. English is having the third place in this list. Hindi is having the fourth place, and Bengali is having the fifth place with 300 million speakers, which consist of the 4% of global population. तो आप लोगों ने देखा कि कितनी तरह की लैंग्वेजेस हैं जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ की जा रही हैं. एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द international contracts or the international deals, so this can actually create a problem. So it is always suggested to be prepared with a translator, or you should have a source through which you can translate the language. Next is norms. Cultures actually differ widely in their norms or standards and the expectations of behaving. Every culture differs in that. So what is norm? Basically, norms are the formal and the informal rules regarding what kind of behavior are acceptable and appropriate within a culture. ठीक है, कुछ general rules, कुछ formal and कुछ informal rules related to a kind of behavior. किस तरह का behavior किसी भी culture में acceptable है, related to that कुछ formal and informal rules comes under the category of the norms. Norms are specific to a culture, time period and the situation. Okay, so when we talk about the religion, so every country is having the different religion, and when you are actually going for the international dealings, so जब भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग या अपने प्रोडक्ट का ऑपरेशन करने जा रहे हो दूसरे कंट्री में, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड हैव द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन विच दे फॉलो. Okay, this affects the terms of the holidays, the working hours, the food habit and the way of dressing. Like according to the religion, all these things used to change, right? So business have to business should have the every detailing and understanding of all these factors. Like multinational companies, for instance, should be aware of the religious holidays in each country where they operate. The most of the Islamic countries, for example, the Islamic countries have significantly lower productivity in the month of the Ramadan fast, right? So Ramadan के fast में Islamic countries की productivity least productivity होती है, ठीक है? They are least productive in this month. Likewise, because उन्हें whole of the month they उनका religion क्या कहता है कि आप particular रमदान के month में fast रखिए. जब fast रखेंगे जब workers, तो productivity down हो जाएगी due to low energy levels. Likewise, the pace of work in many Asian countries is slowed down during the celebration of Chinese New Year. The situation is similar during the Easter holidays in many European countries as well. So here you can see with the help of different example कि किस तरह से religion आपकी productivity को affect कर रहा है. ठीक है, किसी business की productivity को, individual की productivity को ये religion factors इम्पैक्ट कर रहे हैं, और आपको पर्टिकुलर रिलीजन को कंसीडर करके अपने वर्किंग हॉलीडेज,
एंड बाकी सारे जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनको डिज़ाइन करना होगा. Okay, so let's see the adherents of the different religions in the 2020. All across the world, Christianity is the most preferred religion, and there are 31.11% adherents of this religion. Islam is having the second position. Unaffiliated religions, like which are not actually affiliated, different kind of, having the third position. Hinduism is having the fourth position with 15.16% of the world population, and Buddhism is having the sixth position. Let's talk about the artifacts. This is the last element of culture, and this is something which is related to the material objects that constitute a society's material culture. ठीक है, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो जो हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी कल्चर की, तो उसमें जो हमने नॉन सिम्बॉलिक एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें हमने आर्टिफैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब की बात की थी. तो ये जो भी आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिन चीज़ों का, वो सारे आपके आर्टिफैक्ट्स में आएंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इन मोस्ट ऑफ द सिंपल सोसाइटीज़ आर्टिफैक्ट्स आर लार्जली लिमिटेड टू अ फ्यू टूल्स. कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम आर्टिफैक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें, सो द हट्स इन विच पीपल लिव इन, द क्लोथिंग दे वियर, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द आर्टिफैक्ट्स. ओके, एंड for business, all these factors, all these the symbolic factors and non-symbolic cultural factors, all these are required to understand, because these all these factors are having a direct as well as the indirect impact on the business, right? Okay, so this was all about the socio-cultural environment. I hope you all have learned something good from this video. Thank you everyone. Stay tuned to us for the upcoming videos. In the upcoming videos we will discuss about the different factors and the different economic factors that affects the business. Stay tuned to us. Thank you everyone.